Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I am going to discuss with you the Carnot cycle. Before that, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Now, let's get started. Before we proceed, it is very important for us to understand the second law of thermodynamics. Now, see students, first law of thermodynamics does not give us any information about the direction of the reaction. Even if the reaction is taking place, to which direction the reaction is taking place is not at all informed by us from first law of thermodynamics. Second law of thermodynamics actually gives us information about the direction of the reaction. And also, it tells us that even if the work can always be completely converted into heat, but heat can never be completely converted into work without leaving any permanent change in the system or surroundings. Rather, only a fraction of heat can be converted into useful work, and rest remains unavailable and unconverted. From second law of thermodynamics, we will come across to certain new terms, that is the entropy, gives free energy, Helmholtz free energy, that we are going to discuss in our upcoming videos. But today the most important is the Carnot cycle. अभी Carnot cycle जो है, main Carnot cycle का motto ये था that work जो है, it can be converted into heat, but heat can never be completely converted into work. यही science को prove करने गए थे Carnot. The name of the scientist is Sadi Carnot in the year 1824, and it was his job was to demonstrate the maximum convertibility of heat into work. तो वो देखना चाहते थे जितना amount of heat हम absorb कर रहे हैं या total amount of heat completely work में converted होते हैं. So वो देखने के लिए उन्होंने एक ऐसा ideal machine उन्होंने demonstrate किया है जहाँ पे certain criterias input किए गए थे, और उस cycle को हम कहते हैं Carnot heat engine. Okay, now work done जो है यहाँ पे जो various steps involved होते हैं, this is very important students. Work done में जो various steps involved होते हैं, always remember all of them are reversible steps, because reversible work is the maximum possible work which a system can do. और ये मैंने आप लोगों को previous video the video जो है work done का जो video है, मैंने बहुत पूरा mathematical derivation करके मैंने prove किया है that work done reversible is the maximum work done, and work done reversible is greater than work done irreversible. So do watch that video, it is going to be very helpful to you. So उन्होंने जो सारे steps use किए थे, नंबर 1 सारे steps थे reversible steps, है ना, सारे steps reversible steps के, क्योंकि हम जानते हैं work done reversible is the maximum work done. And also उन्होंने जो गैस यूज किए थे वो आइडियल गैस थे. तो पॉइंट नंबर 1 उन्होंने जो किए थे वो है रिवर्सिबल वर्क, सारे स्टेप्स जो थे वो रिवर्सिबल स्टेप्स थे. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, उन्होंने जो गैस यूज किए थे वो गैस आइडियल गैस उन्होंने यूज किए थे. तो आप बोलेंगे मैडम आइडियल गैस तो होते नहीं है. यस, दैट इज करेक्ट. आइडियल गैस के ऊपर एफिशिएंसी डिपेंड करते ही नहीं है, तो वो भी हम प्रूव करेंगे आज के वीडियो में. तो द फर्स्ट थिंग उन्होंने जो किए थे, एक है रिवर्सिबल स्टेप्स थे, एंड सेकंड है जो वर्क डन जो गैस उन्होंने यूज किए थे वो आइडियल गैस यूज किए थे, और लेटर ऑन उन्होंने प्रूव भी कर दिए थे जो एफिशिएंसी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस. ठीक है, और वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए थी, मैक्सिमम वर्क चाहिए था, और वो मैक्सिमम वर्क देखना है. अगर आपको एग्जैक्ट उतना ही वर्क मिलता है जितना आपने हीट अब्सॉर्ब किया है सिस्टम, तो फिर एफिशिएंसी 1 होना चाहिए. अगर होता है कि नहीं, हम वही आज डिस्कस करेंगे ये वीडियो में. नाउ लेट्स सी द स्कीमेटिक प्लान. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आई हैव गिवन यू this indicator diagram of a Carnot cycle. Basically this is the heat source, मतलब जहाँ से
हीट जो टेम्परेचर है, जिसका टेम्परेचर हाई होता है, यू सी आई हैव गिवन T2 इज ग्रेटर देन T1, और सिंक है जिसका टेम्परेचर लो होता है। मतलब सोर्स जो है यहाँ से द सिस्टम जो है, द सिस्टम कैन, यहाँ पे जो सिस्टम है, द सिस्टम कैन absorb it and sink में the cylinder with the piston or the system can give out it. और यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है, दैट जब हीट अब्जॉर्ब होते हैं तब क्या होता है, साइन क्या होगा स्टूडेंट्स, आप जानते हो, पॉजिटिव होगा, और जब हीट गिव आउट होगा Q1, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो द Q1 is the heat given out and Q1 is the heat given out and Q2 is the heat absorbed. And one more thing, यहाँ पे मैंने जो 2 and 1 यूज़ किया है वो हमने सिंक्रोनाइज किया है, मतलब सबस्क्रिप्ट 2 जो है वो हमेशा हायर वैल्यू होगा एंड हायर वैल्यू मतलब हायर टेम्परेचर, एंड सबस्क्रिप्ट 1 जो है वो हमेशा लोअर वैल्यू होता है। लाइक T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड Q2 इज द हीट अब्सॉर्ब्ड, higher temperature, and Q1 is the heat given out. Obviously heat given out is lower value than the heat absorbed, ठीक है। तो 2 हमने वही सबस्क्रिप्ट सेम थ्रू आउट द होल वीडियो हमने वही मेंटेन किया है। ना ये सिस्टम काम कैसे करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पहले भी आप लोगों को बताए थे दैट सिस्टम जो है ये कैसे काम करते हैं। ये हम कोई भी सिस्टम एक पिस्टन लेते हैं, ठीक है, एक सिलेंडर विद अ पिस्टन लेते हैं, ठीक है, एंड आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, अगर एक्सपेंशन होगा तो कैसे होगा, और अगर कंप्रेशन होगा तो कैसे होगा, एंड ऑल्सो कैसे आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन किए जाते हैं, एंड कैसे एडियाबैटिक कंडीशन मेंटेन किए जाते हैं। एंड एवरी सिंगल टाइम वी हैव टू वेरी minutely follow the sign. It is very important every time. So expansion देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो पिस्टन है इसके साथ क्या किए जाते हैं, इसके साथ वेट्स एडिड किए जाते हैं। अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो वेट्स रिड्यूस किए जाते हैं। जब वेट रिड्यूस किए जाएंगे then the pressure of the gas will turn out to be greater than the external pressure, और तब क्या, योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब एक्सपेंशन होगा। और अगर आपको कंप्रेशन करना है तो ये जो वेट्स है ये वेट्स इंक्रीज किए जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट विल बिकम ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द गैस एंड इट विल रिजल्ट इन कंप्रेशन। तो अभी हमें समझना है कि आइसोथर्मल कंडीशन कैसे अटेन किए जाते हैं। हम देखेंगे जब एक्सपेंशन होता है, जब एक्सपेंशन होगा मतलब what is done by the system, then the temperature of this, the temperature क्या हो जाएंगे, temperature of the system will decrease। तब हम क्या करेंगे, ये सिस्टम को हम सोर्स में लेके जाएंगे, ये सिस्टम को हम सोर्स में लेके जाएंगे। सोर्स में लेके जाने के बाद इट विल absorb the required amount of heat and then so that it can maintain the
आइसोथर्मल कंडीशन। मतलब जब आपने एक्सपेंशन किया, फॉर एग्जांपल सिस्टम का पहले का इनिशियल टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। दिस इज जस्ट approximate values that I'm giving you, not exactly. फिर आफ्टर एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन हो गया तब सोचो कि सिस्टम का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। तब ये सिस्टम को सोर्स में लेके गए जहाँ पे हीट अब्सॉर्ब हुआ, मैंने पॉजिटिव साइन दिया है, मतलब हीट इज अब्सॉर्ब। फिर ये जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट इसने लूज किया है तो उसकी वजह से ये एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो है 15 डिग्री सेल्सियस इसने गेन किया और देन इट गेट्स रिटेन बैक टू 40 डिग्री सेल्सियस, एंड इसे हम कहते हैं दैट आइसोथर्मल कंडीशन इज मेंटेन्ड। सिमिलरली अगर कंप्रेशन होगा, क्या होगा? फॉर एग्जांपल हीट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो अगर वो 40 डिग्री सेल्सियस में था, ठीक है, तो कंप्रेशन हो गया आपका, सो इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। तो उसे कहाँ पे ले जाएंगे? उसे सिंक में लेके जाएंगे जहाँ पे हीट विल बी गिवन आउट टू द सिंक, एक्सेस हीट, एंड इट विल अगेन गेट रिवर्टेड बैक टू द initial temperature is 40 degrees Celsius. This is how the isothermal condition is maintained. And how is adiabatic condition manually attained? Whenever you wrap this system, this cylinder, with any insulating pad, so that there is no heat exchange between the system and the surroundings, and that is how this adiabatic condition is maintained. And also remember student, this is very important, that adiabatic condition कभी भी दिमाग में आएंगे तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए that क्या होगा? dq is equal to 0 and p v to the power gamma is constant, and also t v to the power gamma minus 1 is constant. And now about the sign. जब आपका हीट अब्सॉर्ब होगा दैट इज Q2 इन दिस केस, तब साइन हो जाएंगे पॉजिटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। और जब आपका हीट गिवन आउट होगा तो ये Q1 हो जाएंगे और that is given out and is represented by negative sign. So all these minute details are very important for you to understand this Carnot cycle in a very appropriate manner. तो ये तो मैंने सारे conditions आप लोगों को explain किया है। Now let us understand कि यहाँ पे जो operations involved in the Carnot cycle में क्या होता है? This is step A. So you're moving from step A to the step B. This is your step A से step B तक हम जा रहे, and the first step is isothermal. Second step, this is step number 1. Second step is step number 2, that is adiabatic step. ठीक है. Next step number 3 जो है, this is again isothermal. And step number 4 जो है, this is adiabatic step. आइसोथर्मल है इसलिए आप अगर टेम्परेचर को नोटिस करते हो, ये देखो टेम्परेचर इज T2 इज मेंटेन्ड, सो एट अ टेम्परेचर T2, तो आइसोथर्मल में क्या हो रहा है? यू मस्ट बी नोइंग दैट अलोंग द एक्स एक्सिस व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैल्यू इंक्रीजेस, एंड अलोंग द वाई एक्सिस व्हेन यू गो फ्रॉम bottom to the top the value increases. Since from A to B आप देख रहे हो वॉल्यूम V1 to V3 हो गया है, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया? V1 से V3 हो गया, and towards the right hand side corner of the x axis means the volume is increases. It means that it is expansion is taking place, and the temperature, since this is isothermal and the temperature is maintained T2. Clear? Similarly, again from B to C we see V2 to V3 हो गया है. Again you see there is increase in the volume. It means adiabatic expansion. And in this case, the temperature जो है it changes from T2 to T1.
क्लियर। अगेन C2D में आप देख रहे हो फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, मतलब द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो दिस इज isothermal compression, and the temperature, since it is isothermal, at a temperature maintained is T1. Since it is a cyclic process, at the end of the day it is getting reverted to its initial state. Since it is getting reverted to its initial state, and this is an adiabatic process, again you see ये कहाँ से converted है, from V4 to V1, मतलब adiabatic compression. ठीक है, and in this case the temperature is changing from T1 to T2. These things are very important. So the steps involved are, point number 1 we have seen, the steps involved are isothermal expansion and the temperature maintained is T2. Step 2 involved is the adiabatic expansion, and in this case the temperature changes from T2 to T1. Step number 3, we have seen that this is isothermal compression. Since this is isothermal, the temperature maintained is T1. And step number 4, it is adiabatic compression, and in this case the temperature changes from T1 to T2. यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, हम थोड़ा सा और जानेंगे। जब एक्सपेंशन होगा तब क्या होगा, तब टेम्परेचर विल गो डाउन. So maintain the temperature, you have to put the cylinder into the source. It will absorb the excess heat. So in this case the heat is absorbed. Heat is absorbed, since मैंने पूरा maintain किया 2 is greater than 1, तो heat absorbed जो है मैंने यहाँ पे Q2 किया है, and since the heat is absorbed. क्लियर। अभी हम साइन से बात करेंगे। और जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ था, कंप्रेशन होने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएंगे। हम इसे लेके जाएंगे सिंक में। सिंक में क्या होगा, सिंक में इट विल गिव आउट द एक्सेस हीट, मतलब हीट इज गिवन आउट। सो देखो यहाँ पे द सिंक में द हीट इज गिवन आउट इज Q1 एंड सिंस इट इज गिवन आउट द हीट इज नेगेटिव। ठीक है, ये सारे माइन्यूट डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपके लिए ये कार्नोट साइकिल बहुत इजी हो जाए। Now let us understand how much amount of work is obtained from every individual steps. So we move on to the step 1, and step 1 is your isothermal reversible expansion of the working substance. Now this is our step 1 and is the first step, and this is from the step from A to B. In this case, this is isothermal, है ना? And the temperature maintained is what? The temperature maintained in both the case is T2, which is constant. And amount of heat absorbed is Q2. This is the amount of heat absorbed, so I am denoting it as positive. तो अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए. Since it is heat absorbed, I am denoting it as positive. And in this case, since expansion is taking place, means the volume is changing from V1 to V3. The expansion is taking place and the volume is changing from V1 to V2. I'm sorry. The volume is changing from V1 to V2. So this is our first step, and as I already mentioned you, how is this isothermal condition maintained? Usually what happens, you have a piston, you have a cylinder with a piston P which is attached with some weights. If you want to do the expansion, what you need to do in that case, you have to decrease the load on the piston. उससे क्या होगा, उससे एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएंगे, P external और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर
जो है it will become less than the pressure of the gas, and that is why the expansion will take place, as a result of which the temperature of the system will go down. In order to maintain the same temperature, you have to move this system, this cylinder, into the source, where it will absorb Q2 amount of heat. It will absorb Q2 amount of heat, and then what will happen after absorbing Q2 amount of heat? It will maintain the isothermal condition. It will get again reverted back to its T2 temperature. This is how the process is taking place. So now it is very much clear to us, since T2 is constant, मतलब क्या है? Isothermal condition. So dt is equal to 0. Why? Because this is an isothermal condition, and therefore du1, which is equal to n Cv dt, you are considering n to be 1, so Cv into dt, which is equal to 0. Clear? Now, by first law of thermodynamics, we know that du1 is equal to dq2 plus dw2. Since this is equal to 0, so therefore क्या हो जाएंगे? dq2 is equal to minus dw2, or therefore q2 is equal to minus w2. In this case, one more information is important. That is, since the Q2 amount of heat is absorbed, so Q2 is positive in sign over here, and W2 amount of work is done by the system, expansion is taking place, so W2 is negative out here. Clear? And we know that the work done for an isothermal reversible process is nRT ln V final by V initial. In this case, V final क्या है? V final is equal to your V2, and V initial is equal to V1, and the temperature maintained is T2. Therefore, the work obtained in this step is W2, which is equal to minus nRT2 ln V2 by V1. Therefore, Q2, which is equal to minus W2, is equal to RT2 ln V2 by V1. Now you see, the work obtained in the first step is this, minus RT2 ln V2 by V1. Now let us see how much of work is obtained in the step 2. Step 2 is the adiabatic reversible expansion of the working substance. So this is an adiabatic, this is reversible process, and expansion is taking place. So let us see. This is our step 2. This is our step 2, and you're moving from B to C. In that case, the volume is changing from T2 to T1, okay, and since it is adiabatic process, so therefore this is dq is equal to 0. Now how is this adiabatic process obtained? When you wrap the cylinder with any perfectly insulating pad. So when you wrap the cylinder with a perfectly insulating pad, then what will happen? Then there will be no heat exchange between the system and the surroundings, and that is how you can obtain the adiabatic condition. Now from step B to C, you see the temperature is changing from T2 to T1, and dq is equal to 0. Now from first law of thermodynamics, you have du2, this is the second step, is like u2 is equal to dq plus dw. Okay, so this is du2 is equal to dq plus dw, and now in this case you have dq is equal to 0, so this turns out to be du2, which is equal to dw.
Now what is this dU2? dU2 is equal to NCV T final minus T initial, which is equal to dW. Now what is your final work done? Say N is equal to 1, you can say write like W is equal to CV, and what is your final temperature? T1. So T1 minus initial temperature क्या है? T2. So this is T1 minus T2. This is very important. So this much of work is obtained from the second step. Now let us move on to the third step and let us calculate how much of work is obtained in our third step. So third step is our isothermal, reversible, and in this case compression is taking place. Now how is this happening? How is the process is taking place? When the compression will take place, what will happen? When the compression is taking place, what you need to do is that ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के साथ जो पिस्टन है, इसका जो लोड है, so load is decreased. So sorry, अगर compression हो रहा है, the piston का जो load है, the load is slowly increased, as a result of which the external pressure will become greater than the pressure of the gas, and as a result of which compression will take place. तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएंगे, आपको उसे सिंक में लेके जाना पड़ेगा, then it will give out its excess temperature and it will maintain the temperature T1, that is the isothermal condition. Clear? So step 3 जो है, this is the step 3. Step 3 में हम देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है. You are moving from C to D and the volume is changing from V3 to V4. So volume is changing from, compression is taking from V3 to V4. So how much amount in the sink it is giving out? Q1 amount of heat. So how much amount of heat is given out? Q1 amount of heat is given out to the sink to maintain the isothermal temperature, and the temperature T1, since it is isothermal, the temperature T1 is constant and dt is equal to 0. See, temperature हो गया T1. Clear? So by first law of thermodynamics, what you can write? So ये isothermal है. So first law of thermodynamics आपको क्या बोल रहे हैं? du is equal to dq plus dw. Since this is isothermal, therefore du3, which is equal to cv dt, dt is equal to 0, is equal to 0. So therefore 0 is equal to, यहाँ पे जो q है obviously it is a q1, work done भी मैं 1 में denote कर रही हूँ, is equal to q1. Therefore you can again write that dq1 is equal to minus dw1, or you can write that q1 is equal to minus dw1. And we know by formula work done in isothermal reversible process is minus nRT ln V final by V initial. Now let's see what is the final volume. In this case the final volume जो है, the final volume is V4, है ना? See, the final volume is V4 and the initial volume is V3 and the temperature maintained is T1. Therefore the work done W1 will turn out to be minus R T1 ln V4 by V3. Clear? Therefore, you can also write that Q1 is equal to plus RT1 ln V4 by V3. तो हमें ये वर्क डन भी ऑब्टेन हो गया, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3 है. एंड द लास्ट स्टेप एंड द फाइनल स्टेप, यहाँ पे हम देख लेते हैं हाउ मच वर्क इज ऑब्टेन इन द स्टेप 4. सो स्टेप 4 इज अगेन एडियाबेटिक, reversible,
compression of the working substance. Since it is adiabatic process, so adiabatic process, again the cylinder is wrapped with a perfectly insulating pad so that there is no heat exchange between the system and the surroundings, and in this case the temperature will rise. Why? Because compression is taking place. On compression, the temperature increases, and on expansion, the temperature decreases. Because when you are expanding, what will happen? The heat is utilized in doing the work. Okay? Now, this is our step 4. This is our step 4. तो स्टेप 4 कहाँ पे हो रहा है? स्टेप 4 हो रहा है दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है. तो अल्टीमेटली हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे वहीं पे खत्म हो गया. अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है कार्नोट साइकिल, तो फिर जो स्टेट फंक्शन यहाँ पे है वो है इंटरनल एनर्जी, वो भी डेल्टा यू has to be equal to 0 since it is a cyclic process and u is a state function. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? D2A कर रहा है और यहाँ पे compression हो रहा है. तो वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V4 to V1 and as because ये है एक adiabatic process, तो dq हो जाएंगे आपका 0 and the temperature is changing from T1 to T2. This is the final temperature. Now since it is adiabatic process, dq आपका 0 हो जाएंगे, है ना. तो फिर by first law of thermodynamics क्या हो जाएंगे? ये है आपका du which is equal to du4 हो जाएंगे, dq प्लस dw डैश कर लेते हैं. dq आपका 0 हो गया, तो du4 इज इक्वल टू dw डैश. सो अगर आप दोनों ही इंटीग्रेट करते हो, राइट हैंड साइड आप डेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे भी, फिर भी आपको w ही मिलेंगे. व्हाई? बिकॉज वर्क डन इज द पाथ फंक्शन, ठीक है. और यहाँ पे हो गया NCV final temperature. Final temperature in this case is our T2. So this is T2 minus T1. If you notice, you will find out in this case W dash is equal to minus WQ, क्योंकि यहाँ पे CV T2 minus T1 है और जो W था ये देखो आपका T1 minus T2. So W dash आपको क्या मिला? W dash आपको मिला CV T2 minus T1 मिला है और you can therefore write W dash is equal to minus W. Clear? Now हमें सब कुछ मिल गया, हमें सारे इंडिविजुअल जो स्टेप्स है, ये सारे इंडिविजुअल स्टेप्स का कितना टोटल वर्क डन हमें मिल गया है. नाउ द थिंग दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. नाउ द टोटल वर्क डन, वो क्या हो जाएंगे? W total is equal to W2 plus W plus W1 plus W dash. This is step number 1 में हमें W2 मिला था, step number 2 में हमें W मिला है, step number 3 में हमें W1 मिला है and step number 4 में हमें W dash मिला है. और हमने ये भी देखा है W dash is equal to minus W. In that case, you can also write W2 plus W plus W1 minus W dash. So this will turn out to be work done W2 plus W1. Minus W. Since W is equal to W, तो ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया. तो ओवरऑल टोटल वर्क डन जो आपको मिला है वो है W2 प्लस W1. नाउ अगर आप वैल्यू पुट डाउन कर देते हो दोनों का, तो यू विल गेट RT2 ln V2 by V1 and minus RT1 ln V4 by V3. This is the total work done. क्लियर? तो ये वैल्यूज जो है ये हमने ऑलरेडी देखा है. अब देखो यहाँ पे W2 जो है, W2 ऑलरेडी वी गॉट माइनस RT2 ln V2 by V1 एंड W1 जो है वो है माइनस
RT1 ln V4 by V3। तो ये हमने सारे वैल्यूज लिख दिए हैं। अब हम थोड़ा सा और इसे डिटेल में करेंगे। हम जानते हैं दैट द स्टेप्स फ्रॉम A to D and the steps from B to C, these two steps are adiabatic steps. तो एडियाबेटिक स्टेप्स अगर है तो फिर कंडीशंस क्या हो जाएंगे, एक है dq इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या हो जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे t v to the power gamma minus 1 is constant, and therefore you can also say that from the adiabatic curve BC and DA, what do you have? So for the curve BC, what do you have? T. So यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, हम अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज योर V2 और टेम्परेचर इज योर T2, और यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज योर V3 एंड द टेम्परेचर इज योर T1। सो एडियाबेटिक कर्व में आपका क्या हो जाएंगे, यू विल बी गेटिंग दैट T2 V2 to the power gamma minus 1, this is at a point B is equal to, at the point C क्या हो रहा है, T1 V3 to the power gamma minus 1, this is at the point C, clear? And also for the curve जो है हम जा रहे हैं from D to A, for the curve D to A क्या हो रहा है, D में क्या है, D में आप देखेंगे the volume is V4 and the temperature is T1, और A में the volume is V1 and the temperature is T2, so it will turn out to be T1 into V4 to the power gamma minus 1, this is at the step D, is equal to T2 into V1 whole to the power gamma minus 1, and this is at the step A, clear? Now if you consider this equation to be x and this equation to be y, ठीक है, so from equation x and y we get what? So let's divide this. Equation x में मुझे क्या मिला है, equation x जो था यहाँ पे था T2 into V2 to the power gamma minus 1 is equal to T1 into V3 to the power gamma minus 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे T1 by T2 is equal to V2 by V3 whole to the power gamma minus 1, एंड स्टेप y में जो था, स्टेप y में क्या था आपका, स्टेप y में था आपका T1 into V4 to the power gamma minus 1 is equal to T2 into V1 to the power gamma minus 1, तो स्टेप 1 जो है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे दैट T1 by T2 is equal to V1 by V4 whole to the power gamma minus 1। सो इन दोनों से मुझे क्या मिला, दोनों ही is equal to T1 by T2, therefore what I got is V2 by V3 whole to the power gamma minus 1 is equal to V1 by V4 whole to the power gamma minus 1, and therefore definitely you can write that V2 by V3 is equal to V1 by V4, clear? Now let us write the formula of the work done total. Work now see students, total work done जो
टोटल वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमने कुछ ही देर पहले डिराइव किए थे. दिस इज RT2 ln V2 by V1 minus RT1 ln V4 by V3. Now from this you can also write that V4 by V3 is equal to V1 by V2. So this is equal to minus RT2 ln V2 by V1 minus R ln T1 ln V1 by V2. तो अगर इसे रेसिप्रोकेट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे एंड दिस इज इक्वल टू RT2 ln V2 by V1 plus RT1 ln V2 by V1. So this is equal to R ln V2 by V1 into T1 minus T2. Okay. So basically by convention we always write the higher and the final जो steps होते हैं वो पहले लिखते हैं. तो अगर आप इसे rearrange करोगे you will be getting R ln V2 by V1 into T2 minus T1. So therefore you can also write what happened. The total work done is equal to R ln V2 by V1 into T2 minus T1. Now see students, अभी हमें टोटल वर्क डन, टोटल मैंने कितना ये सिस्टम से मुझे वर्क मिला है वो मैंने कैलकुलेट किया है. नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज द एफिशिएंसी, जहाँ पे मैं सेकेंड लॉ मतलब कार्नोट ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसे प्रूव किया है और बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया है. नाउ कितना एफिशिएंसी, कितना आपको काम मिले is defined by the work output by the heat input. अच्छा, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से इसे डेमोन्स्ट्रेट किए गया है. बुक्स लाइक कैस्टेलन एंड केल कपूर, वहां पे उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है. ईटा इज इक्वल टू माइनस वर्क डन टोटल डिवाइड बाय द Q2 because Q2 is nothing but that is the heat absorbed. But एटकिंस में इसे डिफाइन किए गए हैं the mode value of the work done, total work done divided by the mode value. The mode value of the total work done divided by Q2. It doesn't matter कि उसका वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो. क्यों? क्योंकि ये मैंने आप लोगों को वर्क डन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. To watch that video as well. You will become very confident about it. Work done मुझे कितना मिला है that is important to us. Sign will only give you information how much is whether the work is done by the system or on the system. वो हमारे लिए important नहीं है. Sign is giving you about the direction, information about the direction. मुझे total काम कितना मिला है that is important. So basically as per my opinion I appreciate this formula because ये students के लिए easy हो जाते हैं. But as because बहुत standard books like KL Kapoor and Castellan में ऐसे define किए तो मैंने आप लोगों को दोनों ही explain किया है. But मेरा personal preference ये वाला है. This is given in Atkins. Okay, so total work done जो है that is minus work done total that is equal to this value. ठीक है. So दोनों ही केस में आपको जो work done total मिल जाएंगे. ठीक है. वर्क डन टोटल का फॉर्मूला है आपका, इसे आप मॉड भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो. तो इसका वैल्यू है आपका R ln V2 by V1 by T2 minus T1.
and if you want to divide with the Q2, and the value of Q2, you will find out, we have already calculated the value of Q2 is RT2 ln V2 by V1, and this ln V2 by V1 and R this ln V2 by V1 is getting cancelled and R is also getting cancelled, okay na? And then it will turn out to be, this is equal to T2 minus T1 by T2. So this is equal to 1 minus T1 by T2. Or you can also say that this is equal to 1 minus temperature of the sink divided by temperature of the source. At the same time, we can also define it as, say students, since we have seen that Carnot cycle जो है, this is a cyclic process है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा जो इनिशियल स्टेप था मैं वहां तक पहुंच गई, तो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस. So therefore delta u क्या हो जाएंगे, for since u is a state function और ये cyclic process है, तो delta u हो जाएगा आपका 0. Clear? So अगर delta u 0 है, by first law of thermodynamics you have delta u is equal to q total plus w total, and therefore you have q total is equal to minus W total. ठीक है? So Q total is equal to minus W total. And what is your Q total? Q total, and therefore Q total is nothing but it is equal to Q1 plus Q2. ठीक है? Which is equal to minus W total. So by formula, efficiency which was equal to minus W total by Q2 now changes to Q1 plus Q2 divided by Q2. So this is equal to 1 plus Q1 by Q2. यहाँ पे एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है. से स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मुझे दो फॉर्मूला मिला है. यहाँ पे मुझे दो फॉर्मूला मिला है. एक है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 मतलब T sink by T source, and also 1 plus Q1 which is the heat at the sink divided by Q2, that is the heat absorbed at the source. So Q1, always remember students, Q1 is the heat given out at the sink. So therefore इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, because the heat given out is always negative in sign. And Q2 जो है, Q2 is the heat absorbed at the
और फ्रॉम द सोर्स, from the source, and that is why Q2 का जो साइन है ये पॉजिटिव है. I would like to suggest you, आप यही फॉर्मूला यूज करो जब आप प्रॉब्लम्स करोगे, तब आप साइन चेंज करो. क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर मैं फॉर्मूला बोल के ऐसे बता दूंगी, स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं यहाँ पे. तो ऑलवेज रिमेंबर the heat which is given out at the sink is negative. अगर मैं बोल रही हूँ that 220 calories of heat is given out at the sink, ठीक है, तो तब आप उसे -220 calories consider करोगे. ठीक है, so this is very important. So this, if you consider the sign, this can also be written as eta. It will change as 1 minus Q1 by Q2. तो वहां से विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2, एंड वहां पे आपका फॉर्मूला हो जाएंगे T1 बाई T2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2. दोनों ही सही है. कैसे दोनों सही अलग होते हुए भी सेम है, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया. तो जब हीट अब्सॉर्ब होगा तब आपका जो साइन है आप पॉजिटिव लेंगे. जब हीट गिवन आउट होगा साइन आप नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हीट अब्सॉर्ब जो है, जो हायर क्वांटिटी है, वो हम हमेशा पॉजिटिव से डिनोट करते हैं. तो हीट अब्सॉर्ब्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हीट गिवन आउट. ठीक है, सो दैट इज व्हाई हीट अब्सॉर्ब्ड इज डिनोटेड इन पॉजिटिव साइन. सो यहाँ पे आप लोग समझ गए. इवन तो मैंने प्लस साइन लिखा है, लेकिन मैंने साइन को कंक्लूड नहीं किए. तो अगर आप साइन को कंसिडर करोगे तो Q1 नेगेटिव हो जाएंगे. तो ये फॉर्मूला आते हैं. यहाँ पे गलती नहीं करना है, मैं जानती हूँ आप लोग करते हो, इसलिए बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया है. तो ये मुझे एफिशिएंसी मिल गया है. तो फिर ये जो मेरा इक्वेशन है, तो मुझे क्या इक्वेशन मिला है, तो मुझे जो इक्वेशन मिला है which is this. So let us write over here discussion of this equation. So eta का जो फॉर्मूला मुझे मिला है, this is equal to 1 minus temperature of the sink by source. Clear? Now अभी मुझे प्रूफ करना है, मतलब सादी कार्नोट जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर थे, उन्होंने प्रूफ कैसे किया है हम देखते हैं. पॉइंट नंबर 1, ये एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो, आप कोई भी वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर ये एफिशिएंसी डिपेंडेंट नहीं है. द फर्स्ट पॉइंट जो हम एक्सप्रेशन से देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वर्किंग सब्सटेंस का इंडिकेशन या कोई भी टर्म्स नहीं दिया है, तो वी कैन डेफिनेटली से दैट द eta does not depend on the working substance used. I hope you understand. जब मैंने आप लोगों को कहा था कि उन्होंने for convenience उन्होंने आइडियल गैस यूज किए थे which does not exist. It doesn't matter वो कौन से गैस यूज किया है. ठीक है, because it is independent. The efficiency is independent of the working substance. What kind of gas आप use कर, real gas, ideal gas, whatever the kind of gas you are using, it is not going to bring any change in the efficiency, because efficiency is independent of the nature of the working substance used. Next here, that you see it depends on the ratio of the sink and source temperature, है ना. So ये जो second point भी हम formula से समझ गए, that it depends on the ratio of the sink and source temperature. मतलब टी सिंक फॉर्मूला में कौन कौन दिया है, सिंक दिया है और सोर्स दिया है. सो डिपेंड्स ऑन द सिंक एंड सोर्स टेम्परेचर. एंड नाउ द नेक्स्ट टी जो है, ईटा जो है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1. कैसे से देखो, ये जो फॉर्मूला है सोर्स, मैंने आप लोगों का टी सोर्स इज ऑलवेज हायर. ठीक है, द टी सोर्स का वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन द टी सिंक. तो अगर दैट इज वाई क्या हो जाएंगे, टी सिंक बाय सोर्स, इसका वैल्यू will always be less than 1.
ठीक है, विल ऑलवेज बी, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू रहते हैं तो वो 1 से कम होता है। अगर इसका वैल्यू ऑलवेज भी लेस देन 1 हो रहा है, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ईटा जो है, सो यहाँ पे 0.1 0.2 अगर होगा तो 1 माइनस समथिंग, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, अगर इट इज ऑलवेज लेस देन 1 तो ईटा का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। नाउ सी, नाउ मेरा जो फॉर्मूला है दैट इज एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू टी सिंक बाय टी सोर्स। अगर मुझे एफिशिएंसी को 0 करना है तो मुझे क्या क्या कर सकते हूँ, आइदर में टी सिंक जो है इसे मुझे 0 करना है, एंड हम हमेशा 0 केल्विन में यूज करते हैं। जीरो केल्विन, ठीक है, यहाँ पे डिग्री दे दिया, ये गलत है, तो 0 केल्विन होना चाहिए। तो ऊपर का आइदर मुझे 0 करना है, नहीं तो मैं अगर टी सोर्स को इनफाइनाइट कर देती हूं तो भी मेरा ये जो रेशियो है टी सिंक बाय टी सोर्स, ये रेशियो 0 हो जाएंगे। कैसे, आइदर मैं इसे 0 करूंगी और नहीं तो इसे इंफिनिटी करूंगी, तब भी मेरा ये टर्म 0 हो जाएंगे, और अगर मेरा ये टर्म 0 हो जाता है तो फिर मेरा एफिशिएंसी 1 हो जाएंगे। लेकिन दोनों ही पॉसिबल नहीं है, हम 0 केल्विन कभी भी अटेन नहीं कर सकते हैं और सोर्स का भी टेम्परेचर इनफाइनाइट नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई ये टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इट मीन्स दैट एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1. It means that efficiency can never be equal to 100%. It means, so second law of thermodynamics बोल रहे थे कि the total amount of heat absorbed can never be completely converted into work is now definitely proved and is now extremely well defined. ठीक है, so this is how the science has been proved, और science हमेशा prove करना ही पड़ेगा, क्योंकि science का नाम होता है सच्चाई। कभी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे समझ में नहीं, सच्चाई समझ में नहीं आएंगे तो क्या समझ में आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको साइंस कभी भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप उसे सही नहीं पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि साइंस समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि साइंस होता है सच्चाई। क्लियर, तो जो मेरे सच था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जितना भी मैं हीट अब्सॉर्ब करूँ वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्टेड नहीं होता, वो सच्चाई को हमने प्रूव किया है। साइंस बुक्स में कोई भी एवरी सिंगल वर्ड जो लिखे जाते हैं ना, वो सारे सिंगल वर्ड्स प्रूव किए जाते हैं, तब भी वो अलाउड होता है बुक में प्रिंट आउट होने के लिए। इसलिए कभी भी ऐसा मत पढ़ाई करो, ट्रिक्स कर लिया वैसे पढ़ाई मत करो, सच्चाई को समझो। ठीक है, तो देखो जो सच्चाई था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसे सारे कार्नोट इंजीनियर ने कितने अच्छे से प्रूव किया, क्योंकि वो तो सच्चाई है, उसे प्रूव करना ही है। नाउ लेट्स एंड द वीडियो ओवर हियर। आई होप the whole video is completely understandable to you. So thank you for watching our video. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Thank you.